Hello dear students, here we are going to discuss a topic nutrition in green plants. What is the process involved in green plants is photosynthesis. You know very well what is photosynthesis. The process in which green plants prepare their food in the presence of sunlight and chlorophyll. Using CO2 and water plus mineral. Is called photosynthesis. Actually इसके लिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है. रॉ मटेरियल जो प्लांट्स यूज़ करते हैं तो CO2 गैस that is taken up from atmosphere, water plus mineral sap taken from soil through roots of the plant. Okay, and then photons, packets of light from sun. These are trapped by chlorophyll. Okay, to convert that into chemical energy. Chlorophyll found in mesophyll cells, and that is a green pigment. Which convert solar energy to chemical energy. Okay. right. So some important terms and parts of the plant involved in photosynthesis are: first, absorption of water and mineral sap by roots of the plant is caused due to different kind of processes like root pressure. Second, ionic imbalance. And the force created by internal body parts in xylem tissue. Okay, so there is this. What is transpiration? क्या होता है समझेंगे आप इस बात को. There is continuous loss of water through stomata. This loss of water is named as transpiration, right? It causes water and mineral to move upward through xylem tissue. Okay, right? Ascent of sap, there is what? This is the suction force. It is a suction force created by transpiration pull, है ना.
pull water and mineral, जिसको हम sap कहते हैं, sap, in upward direction, in upward direction from roots to leaves. Okay, ये सभी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम ये समझ सकते हैं कि भैया फोटोसिंथेसिस होता कैसे है. सो नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. इसमें बहुत सारी चीज़ें जो पहले से लिखी है वही है, इसलिए मैंने लिख दी है पहले से, सो दैट हमारा टाइम बचेगा. फोटोसिंथेसिस किसको कह रहे हैं? फोटोसिंथेसिस सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस in green plants in which green plants produce their own food with the raw material CO2 and water plus mineral, and in the presence of sunlight and chlorophyll, which is a green pigment. Photosynthesis results in synthesis of organic compounds from CO2 and water along with oxygen as a byproduct. The net reaction of photosynthesis can be summarized as 6 molecules of CO2 combined with 12 molecules of H2O in the presence of sunlight and chlorophyll to produce 1 molecule of glucose. 6 molecules of water vapor are lost and 6 molecules of oxygen are produced. That is required for breathing, and that is respiration in human body and animal body also. लेकिन अगर हम डिटेल में इस प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 phases of reactions. First is light reaction. This is named as light dependent reaction. That means which takes place only in the presence of sunlight. इसका पहला पार्ट होता है फोटोलाइसिस, जिसको हेल्स रिएक्शन भी कहते हैं. सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ लाइट, जिसको हम फोटोन्स कहते हैं बेसिकली, एंड द फॉर्म ऑफ फोटोन्स आप लिख सकते हैं, in the form of photons, right? Packets of light and converted into chemical energy. This energy is used for splitting of water into H plus ion and oxygen gas. That means water molecule in the presence of sunlight photolysis reaction के through H plus ions और OH2 में convert हो जाता है. और इसको रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं because H2O in the presence of NADP. आप समझेंगे NADP क्या है. NADP is a kind of protein. फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, निकोटिन अमाइड एडिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. ओके, NADP प्रेजेंट होता है ऑलरेडी प्लांट के अंदर. NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज रिड्यूस्ड NADP because when hydrogen is added to a substance, that is called reduction reaction. You know very well in chemistry, first chapter you have studied. So NADP, this one. Then we are coming to this, our byproduct is NADPH2, which is used here for reduction of CO2 to glucose. कैसे होता है? NADPH2 plus CO2 in the presence of RUBP. What is this RUBP? I'll tell you right now. RUBP and absence और presence कुछ भी हो सकता है सनलाइट का. जरूरी नहीं कि सनलाइट प्रेजेंस हो, एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों टाइम हो सकता है. इसलिए हम इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं. लाइट, सो C6H12O6 बन जाता है हमारे पास, और प्लस ये NADP एज इट इज़ वापस मिल जाता है. दैट मीन्स इसका हाइड्रोजन कहाँ गया? हाइड्रोजन इज एडेड टू CO2 एंड अल्टीमेटली दिस 1 molecule ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म्ड. ओके, ये दिस इज डार्क रिएक्शन. हमारे पास यहाँ RUBP की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे. RUBP की फुल फॉर्म है राइबुलोज बाइफॉस्फेट. ओके, ये एक्चुअल इंटरनल रिएक्शन है जो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में होती है, और हमें इसको ठीक से समझना और याद रखना जरूरी है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वी हैव डिस्कस्ड द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इन डिटेल. For remaining topics we will come in the next video. Please wait for that and keep revising the topic, keep watching my video, and please subscribe my channel too. Thank you very much.